Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the exercise of chapter 14, that is reproduction. So let's move. So first of all, multiple choice questions or MCQs. The first MCQ says, growing an entire new plant from part of the original plant is called. तो dear students, हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा था प्लांट्स के हवाले से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसके अंदर उससे रेलेवेंट ये क्वेश्चन है। तो एक प्लांट से, ओरिजिनल प्लांट से हम एक नया प्लांट उगा रहे हैं। आपने पढ़ा था प्लांट्स के दो तरह के पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इस फ्लावर और उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जबकि जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं लाइक स्टेम, लाइक रूट्स और लाइक लीव्स, उससे होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब है कि वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बन जाना। सो अल्फा ऑप्शन इज बर्डिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, बर्डिंग जो है दैट इज नॉट रिलेटेड टू प्लांट्स, इट इज रिलेटेड टू सम अदर organisms like yeast or some animals, lower animals like hydra. It is not the correct answer. Option beta says regeneration. So regeneration, it is the regain of the lost or injured part of the body. This is not also a correct option. Option Charlie says fragmentation. तो dear students, fragmentation हमने पढ़ा था प्लेनेरिया के अंदर, जब प्लेनेरिया 8 से 9 पीसेस में ब्रेक होता है और उसके बाद हर ब्रोकन पीस एक नया प्लेनेरिया बना देता है। सो द ओनली ऑप्शन रिमेनिंग इज डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन सेज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ. Let us move to another MCQ. Rhizopus reproduces asexually by. तो डियर स्टूडेंट्स, राइजोपस इट्स अ फंगस। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मेथड्स में इसको डिस्कस किया था। तो राइजोपस बाइनरी फिशन के जरिए, अल्फा ऑप्शन इज बाइनरी फिशन। नो डियर स्टूडेंट्स, बाइनरी फिशन हमने पढ़ा था, that was in bacteria and in amoeba, so that is not related to rhizopus. Option beta says budding. budding जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया इससे प्रीवियस MCQ के अंदर, that is related to hydra or yeast. And the Charlie option says spore formation. Yes dear student, that is the correct option. स्पोर फॉर्मेशन, एक राइजोपस एक फंगस है, एक सैक होता है जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं, और उसके अंदर माइटोसिस के जरिए बनते हैं स्पोर्स। दैट स्पोर्स आर कॉल्ड एज द स्पोर फॉर्मेशन। सो द स्पोर फॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर of this question, and delta option says endospore formation. Dear student, endospore formation हमने पढ़ा था in bacteria. So the correct option for this question is Charlie, that says spore formation. Next question is, a corm develops into a new garlic plant. This is the process of. So हमने अभी इससे previously भी डिस्कस किया कि कॉर्म जो है उससे एक नया गार्लिक प्लांट बन जाना. This is the first option, alpha option, that is vegetative propagation. उसमें हमने डिटेल से पढ़ा था कॉर्म्स, different methods of natural vegetative propagation. So that is the correct answer. Regeneration, meiosis and gametogenesis, these are not related to this question. So the correct answer for this question is vegetative propagation, alpha option. Next question is, which is not an advantage of grafting? नीचे दिए गए कुछ advantages में कौन सा ऐसा advantage है जो grafting से related नहीं है? So the graft is identical to the parent plant. Alpha option says, so that is correct. So that is the advantage. हमारा क्वेश्चन है which is not the an advantage of grafting. Beta option says grafting allows propagation of seedless fruits. Yes, that is also correct. That is also an advantage of grafting. Option Charlie says the graft combines the characteristics of two plants. So dear students, graft कभी भी दो plants के characteristics को नहीं combine करवाता. So that is the correct answer of our multiple choice question, which is not an advantage of grafting. Correct answer is Charlie, that says graft combines the characteristics of two plants. Clear? Another MCQ is, pollination is the transfer of pollens from. तो dear students, pollination हमने डिटेल से पढ़ा था, इसमें उसकी टाइप्स भी पढ़ी थी, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स. सो व्हाट इज पॉलिनेशन, इसकी टाइप्स भी पढ़ी थी हमने, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन इज फ्रॉम पॉलेंस. पॉलेंस का स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. सो लेट्स सर्च आवर आंसर. सो डेल्टा ऑप्शन सेज पेटल टू सेपल.
No, dear student, petal and sepals, they are not the reproductive parts. Option Charlie says sepal to petal. No, dear students, sepal to petal, that is another wrong answer for this question, because sepal and petal, they are the non-necessary parts regarding the reproduction. And beta option says stigma to anther. तो dear students, stigma to anther नहीं होता, बल्कि anther to stigma होता है. Pollens anther में बनते हैं और वो stigma के ऊपर जाकर लैंड करते हैं. So the correct option for this question is alpha option, that is anther to stigma. Let's move to another MCQ. It says डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स मीन. तो डियर स्टूडेंट, डिटेल के साथ आपको समझाया था डबल फर्टिलाइजेशन के एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर दो स्पर्म्स बनते हैं. एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग सेल के साथ और दूसरा स्पर्म फर्टिलाइज करता है फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ. दैट दो फर्टिलाइजेशन हो रही हैं. दैट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. सो अल्फा ऑप्शन सेज फ्यूजन ऑफ टू स्पर्म्स विद टू एग सेल्स. नो डियर स्टूडेंट्स, दो एग सेल तो नहीं होते फीमेल प्लांट्स के अंदर इन द एंजियोस्पर्म्स. दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन बीटा सेज फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विद एग सेल एंड अदर स्पर्म with fusion nucleus. So that is the correct option for this question. So beta option is correct for our question, that is double fertilization in plants means fusion of one sperm with egg cell and the other sperm with fusion nucleus. Clear? Now let's move to another question. It says after fertilization plants the fruit develops from. तो dear students, जब pollination के बाद fertilization हो जाती है तो fruit कहाँ से बनता है? So option alpha says ovule wall. तो dear students, ovule से seed बनता है. Option beta says ovary wall. Yes, my dear student, that is the correct option. After fertilization, the ovary is retained and it is converted into fruit. Clear? So the correct option for this question is beta option, that is ovary wall. Now let's move to another question. It says which part of the female reproductive system receives egg cells from the ovary? So that is very clear cut question कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा ऐसा पार्ट है जो एग सेल्स को रिसीव करता है फ्रॉम द ओवरीज. Ovaries, they release egg cell, and which part of the reproductive system, female reproductive system, receives the egg cells? So delta option is cervix, that is not correct option. Option Charlie says vagina, no dear students. Option beta says uterus, no dear students, that is not correct option. So the only remaining option is alpha, that says fallopian tubes, जिसको हम oviducts भी कहते हैं. So that is the correct option for this answer. So fallopian tube is the structure which receives egg cells from the ovary. Now let's move to another MCQ. It says inside testes the sperms are produced in. तो dear students, आपको डिटेल के साथ डायग्राम के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था कि टेस्टिस के अंदर कुछ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं. उन ट्यूब्यूल्स को हम कहते हैं seminiferous tubules. The seminiferous tubules, they are related to the production of the sperms. So option alpha is vas deferens. Vas deferens is the name of sperm duct, and beta option says sperm duct, that is also the synonym of vas deferens. Option Charlie says seminiferous tubules. Yes, dear students, that is the correct answer of our question, that the sperms are produced inside the seminiferous tubules within the testes. Now let's move to another question. It says which of these cells has a haploid number of chromosomes? तो नीचे कुछ सेल्स की एग्जांपल्स दी गई हैं. इनमें से कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बार बार ये कंसेप्ट समझाया था हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का. हैप्लॉइड ऐसे सेल्स को कहते हैं जिसमें क्रोमोसोम्स अनपेयर्ड फॉर्म में होते हैं, और डिप्लॉइड ऐसे सेल्स को कहा जाता है जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर्ड फॉर्म में होते हैं. So alpha option is spermatogonium. So dear students, spermatogonium was a diploid cell. Option beta says primary spermatocyte, that was also a diploid cell because spermatogonium के अंदर माइटोसिस होती है और माइटोसिस के प्रोड्यूस होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. तो जब माइटोसिस होगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा. And the Charlie option is secondary spermatocyte. So yes, dear students, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होती है मियोसिस 1
और दैट इज रिडक्शन डिवीजन, और उससे प्रोड्यूस होते हैं हैप्लॉइड सेल्स विच आर कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन, दैट इज secondary spermatocyte. Let's move to another question. It says, now why do the gardeners use the method of cutting and grafting? तो गार्डनर्स जो होते हैं माली हजरात, वो कटिंग्स और ग्राफ्टिंग को क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो आपको याद आ गया होगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कटिंग्स एंड ग्राफ्टिंग. सो दीज मेथड्स आर of plant reproduction which are usually chosen because cuttings from the desired plant root poorly or not at all. Also, these methods give plant to a certain characteristic of the rootstock. For example, hardiness, drought tolerance, or disease resistance. Clear? Now, here is another short question, a conceptual question. Parthenogenesis is a type of asexual reproduction. Give comments on this statement. तो parthenogenesis dear students हमने पढ़ा था. पार्थिनोजेनेसिस में होता है कि एग सेल बगैर फर्टिलाइज हुए फंक्शनल एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो और फंक्शनल एम्ब्रियो फिर आके इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाए. दैट इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस. सो यहाँ पर कोई fertilization नहीं हो रही, so that is why it is a method of asexual reproduction. So parthenogenesis is a type of asexual reproduction in which a female gamete or egg cell develops into an individual without fertilization. Animals including most of the wasps, bees and ants that have no sex chromosomes reproduce by this process which is called as parthenogenesis. Now, there is another question. Outline the life cycle of a flowering plant. So, dear students, the major stages of the flower life cycle are the seed, germination, growth, reproduction, pollination, and seed spreading stages. Plants are able to reproduce into two different ways, sexual reproduction and asexual reproduction. Now, what structural adaptations will you find in a wind pollinated flower? तो डियर स्टूडेंट्स, ये डिटेल से हमने डिस्कस किया था द डिफरेंस बिटवीन विंड पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड. यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के हवाले से स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस के हवाले से पूछा गया है. सो जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स दे आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्वस. इनकॉन्स्पिक्वस का मतलब कुछ ज़्यादा विजिबल नहीं होते एंड लैक फ्रेगरेंस, उनमें कोई खुशबू नहीं होती, कोई नेक्टर नहीं होता. द एजेस आर मोस्टली wind pollinated with long feathery stigmas to snag pollen from breeze and with anthers shedding the odors of pollen onto the wind. Clear? मीन्स कि इसमें जो फ्लावर होते हैं ना उनकी खुशबू होती है, वो डल कलर के होते हैं, साइज में थोड़े छोटे होते हैं और उनका फेस डाउनवर्ड होता है और उनके में स्टिग्मा जो होता है वो थोड़ा पेटल्स के बाहर होता है. सो दीज आर फ्यू करेक्टरिस्टिक्स और अडेप्टेशन, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस व्हिच आर फाउंड इन द wind pollinated flowers. Now let's move to another question. It says, give an introduction to Pakistan's National AIDS Control Program, NACP. So, Pakistan's Federal Ministry of Health established National AIDS Control Program or NACP in 1987. In its early stages, the program focused on laboratory diagnosis of suspected HIV cases, but progressively it began to shift its focus towards HIV prevention and control interventions. Now, here are some understanding concepts. What are different ways by which prokaryotes, protozoans, and fungi reproduce asexually? So, the various methods which we discussed in the lectures are spores, some protozoans, and many bacteria. Plants and fungi reproduce via spores. Fission, that was binary fission or multiple fission. Prokaryotes and some protozoans reproduce via binary fission. Like this, with the vegetative propagation. So in vegetative propagation, we discussed the plants having reproducing through natural vegetative propagation as well as through the artificial vegetative propagation. Next, there was budding. So budding we discussed in hydra, in yeast, in
in the corals, etc. Then there was a fragmentation. In fragmentation, we discussed about the planaria, which broke into 8 to 9 pieces, and each piece represented and reproduced into an individual planarian. Here is another question. Explain the different parts of the plant that help in natural vegetative propagation. So dear students, natural vegetative propagation ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसको डिटेल के साथ वन बाय वन हमने डिस्कस भी किया था. So natural vegetative propagation occurs when an axillary bud grows into a lateral shoot and develops its own roots, also known as adventitious roots. डिटेल से आपको बताया था कि adventitious roots क्या होती हैं. इसी तरह से plants structure allowing natural vegetative propagation include bulbs, rhizomes, stolons, and tubers. So these are the various methods by which the natural vegetative propagation occurs in plants. Here is another question. Explain how the apigeal and hypogeal germination is different. So seed germination की types हमने पढ़ी थी on the basis of the elongation of epicotyle and hypocotyle. So in apigeal germination, dear students, this is a type of seed germination. The cotyledons come out of the soil. Epi means above, and geal means it's from earth. So the cotyledons come out of the earth or soil. For example, castor bean. So the cotyledons are brought out of the soil by the excessive growth of a hypocotyle, and the cotyledons become green and function as the first leaves of the seedling. While the hypogeal, hypo means below, geal means earth. In this case, the cotyledons remains inside the soil. For example, pea plant. So the hypocotyle does not elongate much. Instead, the epicotyle grows and takes the plumule above the soil. The cotyledons do not take part in the photosynthesis because they are not outside the soil. Here we have another question. What conditions are necessary for the germination of seed? So all seed needs water, oxygen, and proper temperature in order to germinate. Some seeds require proper light also. Some germinate better in full light, while others require darkness to germinate. When a seed is exposed to proper conditions like water and oxygen are taken in through the seed coat. Here is another question. Outline the methods of asexual reproduction in animals. So we have discussed many asexual reproduction methods in animals. Among them, the first one is fission, the other one is budding, and the third one is fragmentation and parthenogenesis. We have discussed in detail. Here is another question. Write a note on the male and female reproductive systems of rabbit. So male reproductive system I have discussed in detail along with the diagram. The reproductive system of rabbit buck consists of testes, which weighed over 6 grams in some breeds, epididymis, ampoules, vas deferens, urethra, penis, preputial glands, and accessory glands. A well-developed scrotum located adjacent to the penis and the urogenital opening. So these are the male reproductive parts of the rabbit. Now the female reproductive system consists of the female rabbit is a duplex. The uterus is formed by 2 independent horns which split over the whole length, approximately 7 centimeters. Each horn possesses its own cervix. The ovaries, ellipsoidal bodies that have a maximal length of 1 to 1.5 centimeters are located at the end of uterus, right under the kidneys. Clear? Now there is another question. Describe the process of spermatogenesis and oogenesis. So spermatogenesis, spermato means sperm and genesis means the production. Oo means egg and genesis means the production. So these are the processes of formation of male and female gametes. Spermatogenesis leads to the formation of sperms, while oogenesis helps in the formation of ova in the female reproductive system. Here is another question. Describe the process of spermatogenesis and oogenesis. So the fertilization of sperm and ova leads to the formation of a zygote, which further develops into an embryo. So here,
is another question, why do we consider overpopulation a global problem? Overpopulation एक पूरी दुनिया का मसला क्यों समझा जाता है? Because in an overpopulated environment, the number of people might be more than the available essential materials for survival, such as transport, water, shelter, food, or social amenities. This regularly contributes to environmental deterioration, worsening in the quality of life, or even the disintegration of the population. So here another question, why do we consider overpopulation a global problem? So overcrowding leads to the further demand for limited resources, and this in turn can lead to more conflict and warfare. As humans seek out more resources, they take over land that was once the habitat of other species, leading to the huge biodiversity loss. So dear students, hopefully आज की एक्सरसाइज आपको क्लैरिफाई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।